How settle. Let ourselves settle into the present moment. We notice the sounds of the fans turning, the sensation of the air on our skin, the weight of our bodies. We gently move our attention through the body and see where there might be some tension, some tightness, maybe in our foreheads or around the eyes, on the back of our neck. And we can gently allow the tension to drift away and dissolve. And thinking back to the beautiful guided meditation we experienced this morning, we can remember our teacher, the Lord Buddha, with gratitude. And we can open our hearts to experience the flood of his compassion and care and his wish for us to be peaceful and happy. And inspired by his example, we also wish for ourselves that we be able to be peaceful and we extend that same wish to everyone in this hall, everyone joining us on Zoom, and everyone in the world. May we all have the wisdom and the courage to bring peace into our own hearts and minds. Okay, sadhu. Rameshji, please join the circle.
Yes. Let's all fit together into one circle and slide back a little bit to make more room. Yes. So today we'll continue in the same spirit as our discussion yesterday, exploring together the teachings of the Lord Buddha from our own personal experience, sharing our own understanding and learning from each other. And today, the theme that we thought to begin with is a very, very important teaching that the Buddha gave, related to the topic we had discussed yesterday, which was the seeds of goodness. How can we sow in our lives seeds whose sprouting will create peace and happiness for ourselves and others? We had discussed the fact that our mistakes and our suffering, our difficult conditions in life are nothing personal. They're nothing. They're not something that's wrong with us in any innate sense. They're simply the results of causes that were created in the past. And in order to change and to grow, what we need to do is to create new causes. So we heard some beautiful examples and reflections on that yesterday. And today we'll look through one of the most powerful teachings that the Buddha gave, and very practical teachings on how exactly we can go about this, specifically on how we can uproot the harmful negative seeds from our own minds, the negative thoughts that we encounter. So we'll be discussing the teachings from a sutta called the Vitakka Sutta, also known as the sutta on the removal of negative thoughts or distracting thoughts. So we have a summary of it here that we can pass around. Yes. And many of you might already be familiar with this sutta, but it's one of those that we can never go over enough because of how incredibly practical and useful these teachings are. As we know, as the Buddha very clearly taught us, the mind is the forerunner of all phenomena. It's in our own minds that everything that we experience in our lives begins. And when we think and speak with an impure mind, then the world that we experience is painful. All right, we can understand that easily enough, but then how to change, how to deal with, how to relate to the negative thoughts that we experience so often every day. Many of us are familiar with samatha practices. We turn the attention to the breath, to sensations in the body as our main method. And that's wonderful, that's very important, but it's not the only tool. And in order to be truly skilled, in order to become masters of our own minds, we need to have more than one tool in our toolbox. So in this particular sutta, the Buddha gives us five magic tools for the cleansing of our thought process. So we can begin by going through them one by one and briefly discussing each one. And then we'll move on to analyzing and reflecting on them together.
So maybe I'll invite Bante Anavajom to present us with the first technique. So shall I read it or what shall I do? Yeah, maybe you can read and give a short Okay. reflection on it. So number 1, replace distracting thoughts with wholesome thoughts. Bring up opposite wholesome thoughts. And the Buddha also gave a simile, like using a small peg to remove a large one. So just a recent experience that Banditi Saro and me had, and I had, when we were in Deer Park. There was a Tibetan monk giving a introduction to meditation to a beginner, and he asked him, "Please count your breath." And when after a few minutes, he stopped the session and asked him, "Okay, how are you doing?" And the beginner practitioner said, "Well, why do I need to count my breath? Actually, isn't it a distraction? Uh, I'm actually supposed to look at reality, no? This is the point of meditation. So if I count, it's actually, I'm not in the present moment. I have the memory of the previous breath, and now I know I'm number 2, I'm number 3. And the Tibetan monk told him, but it is a kind of a distraction from reality, but it's a good distraction. So this stimuli, like using a small peg to remove a large peg. Because for a beginner, oftentimes, one try to meditate, the mind goes really far away. It's not just a small distraction. You can think about, start from focusing on the breath, and the mind go to United States and to the 18th century and to what will happen next century. And so just counting the breath is actually quite a small peg. It helps to anchor. And for a beginner, it's usually a good one. So this is just a small example of how one kind of use a certain peg, a certain anchor, in order to overcome the general situation where the mind is. So this can be useful for formal meditation practice, but it can also be useful for more general problems that one may encounter. For example, one may happen to have a certain problem with a certain person. And after learning a bit of the Dhamma, one knows actually my mind goes really wild, not rational, and I get into kind of turbulence again and again, completely out of control, miserable, and so on. So one may use a kind of a certain peg. For example, when one think about that person, um, one may turn the attention to the fact that that person may have a mother, okay, or that person might be a father for another person. And it kind of give a little bit of a distraction. Suddenly, it's not just the person who is against me and so on, our business, but there is also another angle to it. It's not just about now I go to screw him, but actually he has also a role, a certain life. And it's kind of a certain distraction that helps one to slow down a bit this kind of wild turbulence and one in ease. So one can make it as a habit of mind, for example, using kind of a pay, okay? Whenever I know that there is a certain problem, I give it a little twist, something a bit positive. There is something, wherever I have aversion, I can bring a bit some compassion or some rational thought about actually, okay, the role of the other person, what the other person is from another point of view, and one make it into a habit. And so it's kind of a way to remove the harshest problems and to soften them down. So this is just a couple of examples. I would also add something about this particular technique, which I think is incredibly powerful, and maybe sometimes something we might not take seriously because it could perhaps seem artificial in a way.
it could seem forced, and often, as Bandyanavajo said, as practitioners, we want to be in touch with reality. But what we don't realize is how deeply skewed our thoughts are away from reality, and we need to maybe skew them back in the opposite direction. There's a trend, I think, in kind of new age popular psychology of positive thinking and affirmations, where one will repeat to oneself a certain sentence. I will succeed at my work project. I will succeed. I can do it. I am a smart, intelligent person. All of these statements that are not ultimately true, but they actually are very, very powerful in the situation that our mind is twisted too far in the other direction. So that, in a way, what the Buddha is recommending here is similar to that approach. If one, for example, has the habit of waking up every morning and immediately dreading the day ahead, I have to go to the office, it's going to be terrible, I can't believe this, why am I still working at this job after all these years? I'm so sick of it, my life is going nowhere. I think this is something many people experience, and it's a habit of mind. And one thing that we can try based on this technique in such a situation is to really consciously, deliberately think the opposite thoughts. Today will be a wonderful day. I have so much to look forward to. And once we start thinking in this way, we'll often be surprised to see that we find examples that are true in that way. It can be a reminder to bring up gratitude. We can think of all the good things that we do have waiting for us, all the things, all the privileges that we have in our life, even if it's as simple as being able to feed oneself and live in a safe environment. So I think this is a very powerful technique. And maybe we can invite our group to share any personal examples of how they might imagine putting this technique into practice. Or maybe we can have a word in Hindi first. तो आज जो हम दोपहर में सुत अब लेने वाले हैं ना, जैसे हमने कल किया था, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भगवान की शिक्षा के अलग अलग आयाम है वो हमें रोजमर्रा के जीवन को और सुचारू रूप से जीने में मदद करें, है ना। ये हमारा दायरा है इस सारे उसका। तो आज जो सुत चुना गया है उसका नाम वितक्त संधान सुत है, शायद आप में से कुछ लोग परिचित होंगे। और बहुत दिलचस्प सुत ये इस प्रकार से है कि इसकी जो इसको जो लगाने की इसका जो एप्लीकेशन है, एक तो खैर चलो सामान्य जो औपचारिक साधना में तो खैर है ही, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण शायद रोजमर्रा के जीवन में जब हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विचार चलते हैं तो उन विचारों को कैसे हैंडल किया जाए, इस सुत का सारा फोकस उस चीज पर है। और इसमें 5 तरीके बताए गए हैं कि किस प्रकार से खास कर कि जो अहितकर, जो द्वेषपूर्ण, जो रागात्मक, इस प्रकार के जो विचार हैं जो सामान्य रूप से हमारे मन में आते ही हैं, इस प्रकार के विचारों को हम कैसे हैंडल करें, कैसे टैकल करें। तो जो पहला तरीका बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि एक विचार को जो नकारात्मक है उसको रिप्लेस किया जाए, उसकी जगह पे उसका जो ऑपोजिट है या उससे जो कुछ सकारात्मक विचार है उससे उसको बदला जाए। तो तिसरो जी ने उदाहरण दिया कि भाई कई बार होता है ना, हम सुबह उठते हैं और मन में बिल्कुल एक तरह से अंधकार सा छाया हुआ है, अरे पता नहीं मैं क्या काम कर रहा हूँ, कितना जीवन बेकार है, क्या है, वही सुबह उठ के जाना है, धक्के खाते हुए ऐसे ऑफिस में जाना है जिसमें मुझे ना तो कोई दिलचस्पी और बाकी लोगों से भी मेरी अनबन है। तो इस प्रकार का उठते ही एक मन विक्षिप्त हो जाता है ना। तो जैसे कह रहे हैं कि इसी की एक सिंपल उदाहरण है, तो हम ऐसी परिस्थिति में उस विचार के बजाय जो जो उस दिन के गुण हैं या जो जो उस दिन में अच्छी संभावना है हमारे लिए,
उसको जानबूझ के मन में लाएं। आप समझ रहे हैं? एक तो पुराने कारणों के वजह से मन में नकारात्मक विचार चल रहे हैं, पर हम पहचान रहे हैं इसको और फिर उसको रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी जगह पे हम उसके विपरीत विचारों को लेके आ रहे हैं। तो आप देखेंगे जो पेपर्स आपके पास हैं उसमें जो पहला आयाम है वो वही है। इसमें सद्भावना का उदाहरण दिया गया है क्योंकि एजम्पशन ये है कि मुख्य रूप से जो मन को विकसित कर रहा है वो द्वेषात्मक विचार है, पर वो कुछ भी हो सकता है। बिंदु इसमें मुख्य बात यह है कि उसको हम एक विचार को दूसरे विचार से जो उसका ऑपोजिट है उससे रिप्लेस करें, है। तो अब खोला जा रहा है डिस्कशन को। आप लोग सोच सकते हैं कि अपने जीवन में भी ऐसा कुछ होता है, हम कभी ऐसा करते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो वी कैन ओपन इट अप नाउ। Let's hear first from Renuka. It's so cool. एक मोस्टली एक छोटा सा उदाहरण है जो मैं डेली थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, वो शेयर कर सकती हूँ। इसमें ये था कि रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है तो दिन खत्म होते होते काफी एग्जॉशन फील होते रहता है। और कई बार ऐसे चीजों के लिए आप जिम्मेदार ठहराए जाते हो जो शायद आपने कभी किए भी ना होंगे, और तो दिन भर काफी अस्त व्यस्त होते, मोस्टली दिन ऐसे ही गुजरता है। तो एक सलाह मुझे अदर सर ने दिया था कि जब डे शुरू करें तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैत्री का पाठ करें और कोशिश करें कि जिनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं अगर उनकी जगह पर हम होते तो किस तरीके से हम चाहते थे कि हमारे से इंटरेक्शन हो। तो इसका कुछ समय से मैंने कोशिश किया कि इसको थोड़ा तरीके से अपने रोजमर्रा के जीवन में इम्प्लीमेंट करूँ। सुबह जाने से पहले तो मैत्री का पाठ करना, फिर जाने के बाद में इनिशियल डेज में से कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखा है, लेकिन कुछ दिन होने के पश्चात मैंने देखा कि पहला इंटरेक्शन जब होता है मैं कोशिश करती हूँ कि सामने से कुछ भी आए थोड़ा सा हंस दूं और बोलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे देखते हैं। तो ये छोटा सा इनिशिएटिव जो हुआ था कि स्टार्टिंग में ही जो बिल्डअप नेगेटिव थॉट जो एक्चुअल में चेन ऑफ इवेंट्स होकर शाम तक बड़ा बन जाता था, उसको किसी भी तरीके से थोड़ा सा पुश करते करते मैंने देखा कि कई हद तक दिन जो है वो सरल तरीके से गुजरना शुरू हो गया है। और फिर अभी शाम को जब वापस आते हैं या रात को जब सोने का मौका मिलता है तो ऐसा होता है कि बहुत ही दिन ऐसा लगता है कि दिन बहुत ही हल्का बीता है। तो ये जो छोटा सा इंटरेक्शन, जो छोटा सा स्टेप इनिशिएटिव शुरू किया था कि हंसकर या मुस्कुराकर या थोड़े से सरल स्वभाव से इंटरेक्शन करना और दिन की शुरुआत करना, ताकि सुबह से ही जो तनाव बिल्डअप हो रहा हो वो शाम तक बड़ा सा स्वरूप ना ले। ये मैंने नोटिस किया कि हाल फिलहाल के दिन में मुझे काफी यूज हुआ है और ऐसा था, ये ऐसा है जो मैं आगे चलकर और भी इसको एक्सट्रापोलेट करूंगी और कल्टीवेट करने की कोशिश करूंगी। उसमें मेरे ख्याल से जो बात है ना वो ये है, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक रेणुका जी ने जो शेयर किया हमने हमने सुना और बहुत बहुत साधुवाद कि हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं। इस सुत का जो फोकस है वो एक जेनेरिक पॉजिटिव माइंड तो है ही, बहुत अच्छी बात है, वो तो हमें रखना ही है। वो और जहां तक मैंने पढ़ा है इसको, जहां तक मुझे समझ आई, एज फार एज आई कैन टेल, दिस इज मोर स्पेसिफिक। इट परटेन्स टू thoughts in relation to a situation, person, very specific. कभी होता है ना कि ये तो इसको तो मैं देख लूंगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ना, व्यक्ति हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, आई रियली जस्ट डोंट वांट टू गो टू हॉस्पिटल, और आई डोंट नो, फॉर एग्जाम्पल मैं आई नो योर लाइफ लिटिल बिट, आई डोंट वांट वार्ड ड्यूटी, है ना, ऐसा। So I think what is being said is it's a little bit of an antidote
to that sort of very specific solid, ना जो चीज हमें जकड़ लेती है. और घरों में तो होता ही है, खास करके दाम्पत्य जीवन में तो काफी होता है. हस्बैंड वाइफ के बीच हो सकता है, बिटवीन टू आई डोंट नो कॉलीग्स हो सकता है, फॉर एग्जांपल, है ना. So that's what they are. That's what the focus is. So we can all try to think like this, and we can see कि मेरे साथ भी किस context में इस प्रकार से होता है. और फिर हम क्रिएटिवली सोचें कि इसको मैं रिप्लेस कैसे करूं. ये रिप्लेसिंग वाली बात है, आप देख रहे हैं पहला वाला जो है ना. I'm trying to think of a good example from my own life. देखिए एक चीज तो जो मैं करता हूँ काफी अब, that is that since I have what is called a द्वेष चरित्र, है ना, एक fault finding mind है, खास करके in relation to people. तो एक चीज जो मैंने अब करनी शुरू की है कुछ समय से, कि ठीक है फलाना फलाना में ये अवगुण है, ये अवगुण है, ये अवगुण है, ठीक है, ओके दैट्स ओके, बट ऑल्सो के फलाने फलाने में ये गुण भी है, ये गुण है, ये अच्छा करता है, वो अच्छा कर लेता है, ये उसकी क्षमता है, एंड सो फोर्थ, है ना. तो दिस इज वन वे जिसमें मैं इसको अप्लाई करता हूँ. एंड टू बी ऑनेस्ट माय सक्सेस रेट इज क्वाइट लो, लेकिन फिर भी ये मेरा एक एफर्ट है. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव अ पर्सनल एग्जांपल टू illustrate this, Can give an example. I observed that I had the tendency to get into worry unnecessarily. Something small will happen and I will proliferate that something huge has happened, something will happen. Who knows what the other person's seeing? He probably will do like that. And so it happened again and again, actually. And eventually, one time somebody gave a Dhamma talk and I realized, like he spoke about people who had different charitas, and he spoke about the vitok charita, the charita of too much worrying, too much doubt. And I suddenly realized that I have to do something about it. So I just started to write down all those occasions that I had kind of excessive worry. And then the moment that I realized that there was nothing behind it, that, why did I worry now for 2 days unnecessarily, and eventually actually nothing happened? Other people actually were busy with completely different things. They didn't thought so much about it. And so just reading again and again those events where I really believed in my thoughts, and then realizing, okay, I was actually wrong. So next time when things like that happened, I was less sure about it, and I could say, okay, probably something is wrong in the way I'm thinking. Let me just wait. Let me just slow down. So actually reflecting on past events where I saw this kind of mistakes that happened, helped me to kind of encounter this kind of tendency. This it's just a query. आप इसमें बोलेंगे तो नहीं तो वो लोग सुन नहीं पाते. It's just a query. कि this sutta is for lay persons or the sangha? Because both group of people would have been different perception of this. It's a query first. Originally, it was taught to monks, but it is also very much applicable to lay people as well. Yes, I mean, I think clearly this is one of those suttas that is for everyone who has a mind and everyone who experiences negative thoughts, which is both monks, unenlightened monks, and lay people. So maybe let's have one more example. If anyone can think of some persistent negative thought that they're comfortable with sharing, and some creative opposite. So yeah, this particular technique, it does require some creativity. It's a very active type of practice. Some meditations involve more, choiceless awareness or these kinds of things where one is simply observing the mind. But here it's very different. This takes imagination, this takes creativity, this takes determination.
We really need to, first of all, recognize our negative patterns. If it's a person, for example, we need to really, with mindfulness, notice, I always feel bad after I meet this person. I'm always dreading my interactions with him. I always think of when his name comes up, I get angry. I remember all the funny ways he looked at me and all the things he said that I didn't like. So first of all, we need to see that and see how much suffering it causes us. And then we need to take the firm step of saying, I'm not going to let this go on. I'm going to change my thinking in an active way. And it has to be creative. We have to see what works for us. For example, as Bhantana Vajo said, we can find even the smallest thing that is good about this person. We can think, well, this person has a family and his parents must love him. And that can already soften our anger. And then we need to come back. Every time we see the anger coming up again, we knock it out like the rotten peg. We knock it out with our fresh new peg. And we think, this person has a loving family. Whether he does or not, it actually doesn't matter. We bring up the positive thought, and that colors our mind with brightness. So let's hear one more example. So recently, I was also caught in one incident and I was struggling to break that. Although I had some temporary fix and I detached myself by going out or this way. While I was driving, so I was not convinced with the, not convinced, I would say, but I was having this doubt that this will come again. And while I was driving, all of a sudden, there's some other way out came. It's like that I imagined somebody, how she would deal with this. I know her, she is extremely calm person, and I felt that, this situation, if she would have faced, how she would have dealt with. So, and then somehow some small chit chat, maybe in small conversation just flashed. And then I could imagine that, no, this is how that completely changed my screen. That completely changed. And that was something I was able to convince myself. I was able to, because I was not accepting some solution that how would I act like this? Because if I got a fix, okay, this is the way you should be behaving and deal with the situation. But then moment I used to, think about it or imagine myself doing that, enacting that, I was not convinced, as if I would not be able to do that. But then moment she acted it, she dealt with that situation, I was convinced and I was able to believe that, yes, this is the way that you should be. Yeah. Yeah, thank you. That's a great example. If I understood correctly, that sounds really, really skillful and wise. If you have a recurring issue coming up, feeling that you can't deal with a problem, you can't imagine yourself handling the problem, and then you knock that out with this very creative image that you bring in of your friend who can take it on, who can solve the problem, and that thought gives you the energy and gives you the ability to move forward. That's very, very helpful. So. Yeah. So that actually answered all my questions, because if you imagine something or believe some answers, so maybe not all the aspects are cleared. So maybe not all the aspects are answered. So, but then when she answered, I could imagine the entire cycle in front of me, that she answered the all my questions because she dealt with that situation so finely. So that's how it was complete satisfaction for me.
Beautiful. Like sadhu. ये जो साधना की विधि है ना, ये ये सक्रिय और रचनात्मक तरीके से हमारी सोचने की क्षमता को उपयोग करने की विधि है एक्चुअली। हम कई बार सोचते हैं ना भाई साधना करते हैं आंख बंद करके बस कॉन्सेंट्रेट करते रहो, वो भी साधना है, ऑफ कोर्स वो एक प्रकार की साधना है। तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात हमें याद दिलाई कि भगवान सिखा रहे हैं इस प्रकार की साधनाएं भी, और ये साधनाएं हम औपचारिक जैसे हमने बात की वैसे भी कर सकते हैं, और एक्टिवली जीवन में जैसे प्रतिभा जी ने उदाहरण दिया उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो तिसरो जी ने बताया कि भाई बहुत जरूरी है कि हमारी रचनात्मकता जो है, क्रिएटिविटी है, कल्पना शक्ति जो है, इसका उपयोग, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण टूल्स हैं हमारी धम्मा जर्नी में। कभी हमें लगता है कि बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देख लो, यहाँ देखने के बजाय एक्टिव थॉट लगाने की बात हो रही है। Then I have an example. Shivendra shared it with you as well. If you remember, he was having this real conflict situation in his office with one particular person, है ना? And then at that time, Shivendra was living. आप लोग में से कुछ लोग शिवेंद्र को जानते हैं शायद. He was living at my parents' place, and my parents have several dogs, of which one is this really fat, very cute-looking dog who at that time had gotten into a fight and was beaten up by others. तो उसको काफी चोटें थीं और वो और भी बेचारा और भी क्यूट लग रहा था। तो और उसकी स्टोरी, उसका नाम सुंदर है, आप में से कुछ लोग जानते हैं। एंड सुंदर has always got like funny stories going on around him, है ना? तो what शिवेंद्र started doing was, इस व्यक्ति जिससे इसकी ऑफिस में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, वो आया ऑफिस में, उनका इंटरेक्शन शुरू हुआ। शिवेंद्र कल्पना करता था, उस व्यक्ति के शक्ल की जगह सुंदर की शक्ल लगा देता था। हाँ, and it worked for him for some time at least. I don't know what happened eventually, but you remember he was telling us this story. So this is an example of this. अब जरूरी नहीं सब लोग कुत्ते की शक्ल लगाएं, आदमी की शक्ल, ये बात नहीं है, पर ये उदाहरण है कि कैसे हम क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के प्रति जहां द्वेष आ रहा है वहां हम उस पे द्वेष की बजाय कोई भी ऐसी चीज लगा दें जो कि उसको हमें रिप्लेस करती है। Yes, that's another wonderful example. And just to mention that this is an essential aspect of right effort, one of the factors of the Noble Eightfold Path. Essentially, we want to bring rise, well, specifically in this case, it would be the factor of right effort, which involves the removal of negative, unwholesome states that have arisen. And that's essential. It's one of the factors of the path, and it's something we all need to be very mindful of developing. And as the name implies, right effort, it involves active, intentional effort. So this is really about taking control of our thinking process. So let's move on to the next step. Another very important tool that the Buddha gives us in dealing with negative, dangerous thoughts. Maybe Ajahn Navarro can read us step number 2, or tool number 2 from the list. It takes a second to come on. Okay, so it says, see the harmful effects of such thoughts of danger, effects on danger. And there's a simile which it's like feeling disgust at carrying a dead body around the neck. Right. Yes. Thank you, Ajahn. So this approach involves, it's quite different from the first one. It involves, once we are aware that we're having a negative thought, let's say we're really angry at someone, it keeps coming up in our mind what they did to us, how unfair it is. They're getting all these privileges that actually we deserve, and they're manipulating the situation to get what they want at our expense. How dare they? This is looping in our minds. Okay, and then with mindfulness, we notice, we see this happening. And what the Buddha is suggesting us to do here
is to reflect on the dangerous nature of thinking in this way, on the danger of these thoughts, because it's not the case that thoughts are neutral, that they kind of just float away and don't leave a trace. These thoughts are, every thought that we think is pulling our mind in a certain direction, and it's leaving a trace on our mind. And it's, you could say, digging the neural pathways in our brain a little bit deeper in its own direction. So the more angry thoughts we think, the more angry we become, the deeper, the easier it is for us to get angry. And the more we live in an angry world. And if we really deeply look into that, that's incredibly dangerous. If we go too far down the road of anger, then, well, we only need to look at the news once in a while to see where that goes. It leads to violence, war, and this is not at all uncommon. I mean, this is happening every single day. People can explode at each other over things that are quite trivial because they've allowed their minds, unfortunately, to be pulled along by these angry thoughts to the point where terrible consequences happen. So the simile also the Buddha gives here is very, very powerful. Maybe Bhante Navajo can describe it to us. Yeah, so feeling disgust at carrying a dead body around the neck. So in a way, it's both a danger, but also a sense of embarrassment, maybe, or a kind of how do we want to see ourselves, actually? Because it's both seeing what the danger that can come out of it, but also it is really how my mind is. And so one thing that is often said, for example, people who want to overcome certain addictions, just to join in a group of people who keep the same struggle, same standards. Let's say it's alcoholics or people who try to stop smoking. And gradually they develop this sense that actually the one who overcomes this kind of habit is how I want to see myself, because one has this kind of social support. So also it's good to point out this kind of external condition that is very helpful, to be around good people. Also in terms of our Dhamma practice, suppose we want to cultivate Sila. If we keep regular contact with people who keep a good Sila, perhaps with the Sangha as well, then this kind of image of how we want to see ourselves comes closer inside, and so we become more sensitive to actually who we are, how do we see ourselves. In order to really be happy and proud and confident in ourselves, a sense of value about ourselves, it very much depends on the quality of our thoughts and actions. So whatever we develop, whether it's a habit to meditate, the habit to keep good sila, the general good habits, is affecting the whole way we experience ourselves. And then every kind of straying away from this, we become more sensitive to it. The more we are sensitive to it, we are more motivated to overcome it. Yeah. Maybe Sapna, can you just summarize in Hindi about this technique before we start hearing some reflections from the group? जो ये सेकंड पॉइंट है इसमें
जो नेगेटिव थॉट्स, जो नकारात्मक विचार हमारे मन में चल रहे हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसमें ये है कि हानि पर विचार करें। भगवान ने बताया है कि वो जो थॉट्स हैं उनके नुकसान को हमें समझना है। और इसमें जो उपमा दी गई है वो ये है कि जैसे गले में अगर कोई मृत शरीर लटका लिया है तो उससे बहुत घृणा होती है। ऐसे ही जो विचार है, हम उनके नुकसान को समझ पाए। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि हम एक्चुअल में अपने आप को कैसे देखते हैं। एक्चुअल में हम किस तरह से बनना चाहते हैं। तो जो हम बनना चाहते हैं हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। और जो ये थॉट है, ये जो हमें नुकसान कर रहा है, जैसे कि बंटे ने बताया कि हमें अगर एंगर आ रहा है और वो एंगर का जो थॉट है वो बार 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 आ रहा है, तो उससे क्या नुकसान हमें हो रहा है। जब हम उसको समझेंगे तो अंदर से अपने आप एक प्रेरणा जागेगी कि हम उस थॉट को छोड़ दें। That's it. Yes, perfect. One thing that came to my mind in this context, I remember some time ago, I was reading some stories about near-death experiences that some people have when they're close to death, and they experience traveling in different ethereal realms of being. And one they wouldn't be embarrassed. So that's the story. I mean, we don't know exactly how real it is, but I thought there was an interesting thought experiment. If the people in my life could read my mind, what would they think? And often we might not like what they would think if they could see into our thoughts. So I think that might be one way to reflect on this. If someone who really loved me could look into my mind and see what I was thinking, what would they think? Would they be proud of me or would they be disappointed? Maybe Ashlesh can share with us his reflections on this particular technique. One incident I can remember. प्रैक्टिकल एक इंसिडेंट है कि मैं एक जगह मुझे जाना पड़ता था, वहां से रूम से बस स्टैंड के लिए, और वहां बीच में वो कूड़े का पहाड़ होता था और बहुत गंदा महकता था वो। तो उसको मतलब जाते ही मुझे उल्टी सी आ जाती थी। तो मैंने बहुत सोचा कि इसका क्या कर सकते हैं, उसको स्किप नहीं कर सकते। तो मैंने ये क्रिएटिव आइडिया सोचा कि मैं जब वहां से जाऊंगा तो मैं कुछ ऐसी चीज याद करूंगा, जैसे मैं जैसे याद करूंगा कि किसी मिठाई के बारे में सोचूंगा, फॉर एग्जांपल रसगुल्ले के बारे में या फिर गाजर के हलवे के बारे में, और मैं सोचता हूँ वहां से निकल जाऊंगा। और मेरा एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया, और इट एक्चुअली पेड। और फिर मुझे वहां पे वो
उतनी ज्यादा नहीं हुई, और मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ। तो अ, इसमें यही था कि जो जो बाहर से जो हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे थे, तो उसको क्रिएटिव वे में मैंने उसको रेक्टिफाई किया। So he recited a story that he used to take one path always, and there used to be a big garbage hill made up of garbage, and it was very difficult to pass that road because it used to smell so bad. So he found a creative way to deal with it. Is whenever I'm passing, I'll think of something very delicious. So he thought of imagining maybe a gajar ka halwa or gulab jamun, and then he said that moment he used to pass that, he used to keep that in mind, and that worked. Is what he mentioned. Okay, that's a very creative example. I'm not sure if it 100% matches. Oh, okay, yes, it's a great example for the first technique. Although in this case you're dealing with an external experience, but distracting yourself from the negative experience with a wholesome thought. So that's a great example for the first approach. But I wonder if anyone maybe has had an experience of recognizing in themselves, or maybe even in somebody else, the harmful effects that sustained negative thinking can have. I mean, I remember I had a boss at one point in a place I was working who I, at some point, began to realize was thinking in very negative ways, thinking in quite paranoid ways, often a lot of the time about what the people he was working with were up to and how they were trying to get ahead of him in underhanded ways and thinking in these kind of very suspicious and critical ways. And that's my perception of how he was thinking, but it seemed, in my understanding, to lead to a lot of suffering on his part. And I definitely remember thinking, I really want to be careful. I don't end up like that. I really have to watch out that I don't fall into this kind of paranoid way of thinking, because the consequences look really painful. So maybe if someone has had a similar experience, they can share. I would like to share my own experience. Some time ago, I was going through some difficult phase in my life, and I was thinking again and again and again throughout day and night about that incident. Like, why did it happen? What was my fault? Why me? This type. And gradually, I felt it was affecting my physical health along with my mental, emotional health, and lots of physical ailments I found in myself. Along with that, I experienced that I was lagging behind in my career also, because my entire focus was just on that aspect. I ignored all the other aspects of my life; those were going well. And then I saw I am lagging behind in my career. These thoughts are affecting my physical health. So I could see those dangers. And then finally, I felt motivated to abandon those thoughts completely. And now I feel that I have abandoned those thoughts. And I am at par with my career and other things also. That's it. Let's just make room for our new arrivals. Oh, here, I think there's room here on this side. Can just come over here. Yes.
अ, अ, कुछ समय पहले मेरी लाइफ में कुछ एक इंसिडेंट्स हुए और जिनके बारे में सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हो रही थी। और सोचना मतलब ये कि ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया है। और लॉ ऑफ कम जो है उसमें बहुत डाउट आना, लाइक एक ओवर थिंकिंग अलॉन्ग विद, मैं बोल सकती हूँ कि शायद एक नकारात्मक विचार भी चल रहे थे। और उसकी वजह से ऐसा था कि मेरी जो फिजिकल हेल्थ है उस वो अफेक्ट होने लगी, और उसके साथ साथ मैंने देखा कि मैं अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी। तो जो मेरे कुलीग्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बहुत आगे निकल चुके थे और मैं बहुत पीछे रह गई थी। तो जब मुझे कुछ टाइम तक तो मैं जो ये नुकसान हो रहा था उसको देख ही नहीं पा रही थी, समझ ही नहीं पा रही थी। कुछ टाइम के बाद जब मुझे लगा कि सिर्फ वो एक ओवर थिंकिंग का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो एक प्रेरणा हुई कि मुझे ये सारे विचार छोड़ देने हैं और मुझे जो वो इंसिडेंट है या वो है वो अपनी जगह है, वो मेरे कंट्रोल से बाहर है। तो जो चीज़ सो कॉल जिनके ऊपर मैं वर्क कर सकती हूँ, तो मैंने उस पर काम किया और अभी आई एम अभी वो मेरा करियर और फिजिकल हेल्थ आर मच बेटर। थैंक यू। Yes, thank you, Sapna. That's a perfect example. Um, yeah, sometimes that's what it takes. We need to clearly see the consequences of our thinking. It's not just it's not, as we said, it's not harmless. To think negative thoughts has consequences, and it sometimes it's only when that becomes real for us that we can make the change. And that's very powerful, because sometimes that's what it takes to really see how our lives are going downhill because of our thinking. Maybe if we can have one more person share something on this theme. Mahesh. सो कभी कभी सो मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। सो मैं एक रिलेशनशिप में था एंड द गर्ल वाज नार्सिसिस्ट। सो आई started feeling drained out a lot. So I would get up tired in the morning. So बहुत इस तरह की चीजें चल रहे थे। आई लॉस्ट माई फोकस। तो बहुत सारे ऐसे उसके रिपरकशंस होने लग गए थे। सो वेरी सून आई रियलाइज्ड इट्स ऑल्सो इम्पैक्टिंग माई बॉडी हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, ऑफ कोर्स माइंड। सो वो रियलाइजेशन के बाद एंड आई टेक ए डिसीजन कि आई वुड ब्रेकअप। सो मैंने वो ब्रेकअप इनिशिएट किया, और इन जस्ट 2 or 3 days, मे बी बिकॉज of the merits and of the practice I did in the past, so I moved on in 2-3 days. So yeah, because of seeing the danger in the future कि अगर मैं वो कंटिन्यू करूँगा तो और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। So it would be much more difficult to come out from that situation. So sooner is better. Yeah. तो जरा हम दोबारा से याद करा दें कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक सूत्र है जिसको वितक संधान सूत्र कहते हैं, जो बहुत दिलचस्प है। वो हमें बताता है कि अलग अलग प्रकार के हमारे मन में जो विचार उठते हैं
उन विचारों को हम हैंडल कैसे करें, है ना, मूल रूप से ये है। और उसमें 5 तरीके, 5 स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं। तो जो हैंडआउट है, जो पेज है हमारे सामने, उसमें वो डिस्क्राइब्ड है। तो अभी हमने पिछले आधे पौने घंटे में पहले 2 डिस्कस किए हैं। एक तो रिप्लेसमेंट का डिस्कस किया है और कुछ लाइव एग्जांपल्स हमने लिए, और दूसरा अभी हमने डिस्कस किया कि भाई किसी भी विचार जो मेरे मन में चल रहा है, मैं उस विचार पे और विचार करूं, विवेचन करूं, रिफ्लेक्शन करूं कि भैया अगर ये विचार मैंने चलने दिया आगे तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा मेरे ऊपर, मेरे परिवार वालों के ऊपर, वगैरह वगैरह। तो रिफ्लेक्टिंग ऑन डेंजर। और इसकी सिमिल, डिड वी डिस्कस द सिमिली? इसमें इसमें जो The simile of the disgusting dead body. Yeah, I can mention it again. उसमें जो उपमा दी थी वो ये थी, बहुत दिलचस्प उपमा है, और कभी कभी सुत्तों में बड़ी ग्राफिक इमेजेस आती हैं, है ना। उसमें उपमा ऐसी दी गई है कि आप इमेजिन करिए कि अगर आपके गले में कुछ मरे हुए शव, कुत्तों के, डॉग्स, इज इट इन द सुत्ता? Like dead snake. एंड स्नेक्स, हाँ, मरे हुए सांप और मरे हुए कुत्तों की माला अगर आपके गले में लटका दी जाए तो क्या करोगे? फटाफट उसको निकाल के फेंकेंगे ना हम, फटाफट उसमें सोचेंगे, देखेंगे, प्रोसेस थोड़ी करेंगे उसको, हम तुरंत निकाल के फेंकेंगे। तो इसी प्रकार से ऐसा विचार जो कोई भी नकारात्मक विचार है ना, उसके प्रति मेरा ये भी रवैया हो सकता है कि मैं उसको फटाक से निकाल के बाहर कर दूं। ऑफ कोर्स वो वापस आएगा, वो तो है ना, और दोबारा करो और दोबारा करो और दोबारा करो। तो ये एक इसमें स्ट्रैटेजी बताई गई, उसके भी डिस्कशन चल रही थी। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं और फिर हम और चर्चा कर सकते हैं। Yeah, I'll just add one last thought about this point. I think the simile here especially emphasizes this because if we read the sutta, which is definitely recommended, the Buddha, this says that it's like a young man or woman, a beautiful young man or woman who is going out. I don't remember all the details, but essentially it's describing a beautiful young man or woman, well dressed, well decorated, and then suddenly discovering this hideous corpse hanging on their body. So it touches on this question of beauty, which is something that's very important for all human beings. We all want this quality of beauty. External physical beauty is something that the world is so concerned about, and we all know how much time and effort and money goes into this question of external beauty. And yet, as the Buddha teaches us, that's not the important thing, and that's quite pointless in the end. But internal beauty is all the more important. And the Buddha is giving us here a very clear example of what destroys that internal beauty, what makes our mind ugly. And these negative thoughts of anger, thoughts of greed, deluded thoughts, they're like something that is destroying the beauty of our mind. So that's another way to look at it. And now Bhante Aravajo can present us with the third technique. So ignore and withdraw attention. Do not engage. Let the thought fade. And there is a simile. Like closing the eyes to avoid seeing something unpleasant. So in a way, we are all familiar with the usual meditation technique. We sit, we straighten the back, relax the body, and whatever thought come, we just avoid it. Come back to a neutral meditation object like the breath or the body, which has nothing negative in it. But then also in daily life, it's kind of a general teaching to keep always mindfulness in the body, not letting ourselves to be carried away with thoughts. And whenever there is a thought arise,
or some negative pattern arises, then we can actually remember, actually it's just a thought. I don't have to get carried away with it. Similar to just seeing a very ugly sight. Let's say we see a terrible garbage mountain outside of Delhi. You can just look to the other side. So in the same way, we have something really annoying in the mind, and we remember actually just a thought. I don't have to be caught up with it. I have the power to think about whatever I choose to think. I can look at whatever I choose to look. So we simply turn our mind to something else, like our body or our breath, or maybe reciting the mantra Buddha, keeping our mind on Buddha, on the Buddha. And if it works, it's great. ठीक है, इसके उदाहरण, हाँ जी, मनीष और जितेंद्र, आप भी अपना उदाहरण दीजिएगा कि आपने कैसे इस रास्ते में सो जैसे कभी बहुत रशिंग थॉट्स आते हैं तो मैं एक बहुत सिंपल टेक्निक यूज करता हूँ, सो जाता हूँ. And it is very powerful technique because sleeping is also a kind of meditation. It's a very natural way of meditating. So whenever there is a rushing thought, and one more thing I do actually is start walking. So I don't change the thought. I have a thought and then keep walking. It's also actually somehow after some times I see that thought is faded away. It has no power. So, and it's a very powerful technique I have observed and I follow. So even whenever I have a very rushing thoughts, I don't meditate. I just sleep. Even for 15-minute nap, give me a great relief. It's my personal experience. I don't know. जी मनीष, दो तीन मुद्दे हैं. एक तो बहुत बार हमने डिस्कस किया है ना कि ये जो मेडिटेट शब्द है ना, हमें लगता है कि मेडिटेट शब्द की एक होमोजेनस परिभाषा है. ऐसा नहीं है. अब ये भी मेडिटेशन है. मेडिटेशन की परिभाषा अजन जयसारो बताते हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग को परिपूर्ण करने को मेडिटेशन कहते हैं. तो व्हेन यू से कि जब बहुत थॉट्स चल रहे होते हैं आई डोंट मेडिटेट, आपका क्या तात्पर्य है? पहले इसको बताओ, फिर अपन आगे चलते हैं. बताओ. जैसे इसको छोड़ दो, पेपर को छोड़ दो. आपकी क्या परिभाषा है? क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है जिसकी क्लैरिफिकेशन जरूरी है ताकि हम लोग यहां से भ्रम को बढ़ा के ना जाएं, है ना? कहा जाता है कि जब वैसे विपस्सना मेडिटेशन में भी जब हम लोग करते थे कि जब अगर आपके माइंड इज नॉट फुल ऑफ wholesome thoughts, you should not meditate. You don't sit and meditate. Let your thoughts settle down and then just meditate. वो मैंने just add कर दिया, but वो मतलब it was additional. But मैं ये कहना चाहता था कि जब भी आप अच्छे मूड में ना हो तो मेडिटेट नहीं करना चाहिए. तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जब भी ऐसा होता है, जब मैं रशिंग थॉट होते हैं कि तो मैं सो जाता हूँ. एंड yeah, it's kind of ignorance and withdrawing attentions from the rushing situation. और दूसरा है कि मैं वॉक करने लग जाता हूँ and I've seen the big changes with no efforts, effortless effort. I have seen it. तो जी यहाँ पे है, बाकी जी नहीं, ठीक है. मेरे ख्याल से 2-3 चीज हम सब क्लियरली समझने की कोशिश करें. ठीक है. एक तो मनीष बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया. हम सबके साथ ऐसा होता है कि कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग विचार लगातार और बहुत हमें परेशान करते हैं. ठीक है. ये हम सबका कभी ना कभी एक्सपीरियंस रहा ही होगा. तो भगवान की शिक्षा में क्या सुझाव
दिया जाता है, उसका एक क्रमशः अप्रोच है उसकी, है ना। जिस क्रम में पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी सती इतनी हो कि हमें दिखे कि अच्छा ये थॉट है, उसको हम बहुत ज्यादा सीरियसली ना लें। नंबर 3 लगभग ये एज्यूम कर रहा है, अक्सर वो नहीं हो पाता है। फिर हम जो अन्य पहले 2 उपाय हैं, या जो उपाय नंबर 4 आएगा 5 आएगा, उसको देखेंगे। अक्सर वो भी नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी तीव्रता इतनी ज्यादा है। ये हम सबके साथ होता है, ये कोई 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 इसमें नई बात नहीं। तो अपने आप को कुछ समय के लिए रणभूमि से हटा लेना इज क्वाइट ओके, लेकिन अपने आप को रणभूमि से हटा लेना मेरा डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता है कि जी जब भी कोई दिक्कत हुई मैं रणभूमि से मैंने अपने आप को हटा लिया। ध्यान सोचने की बात है जरा इसको, ठीक है। मैं 2-3 प्रोपोजिशंस रख रहा हूं, ध्यान से सोचिएगा इसको। दूसरा, ये मैंने और भी कहीं सुना है कि भाई स्लीपिंग इज मेडिटेशन, है ना। इससे ज्यादा भ्रम वाली बात कोई नहीं हो सकती है। अगर मेडिटेशन की कोई हम ब्रॉड डेफिनेशन भी ले लें, उस सब में सती पुष्ट होती है। सती इज अ यूनिवर्सल मेंटल फैक्टर इन एनी होलसम चित्त। तो सती के अभाव से मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, दैट कांट बी कॉल्ड मेडिटेशन। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद स्लीपिंग। अगर मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं सो रहा हूं, उसमें आई एम नॉट डिबेटिंग दैट विद यू, पर मैं इस भ्रम में ना रहूं कि मैं मेडिटेट कर रहा हूं, इस भ्रम में मैं ना रहूं। सती के अभाव में जो भी करूंगा मैं, वो कहीं ना कहीं मुझे अकुशलता की तरफ ही ले जा रहा है। तीसरी बात, एज फायर फाइटिंग मैं वॉक कर लूं, सो जाऊं, ठीक है। बट जैसे उदाहरण, मैं कई बार आप लोगों ने, आप सब मेरे से ये उदाहरण सुन सुन के परेशान हो चुके होंगे कि मुझे अगर किसी प्रकार की मेलिग्नेंसी है, कैंसर है, और मैं बार बार पैरासिटामोल लेता रहता हूं, मुझे आराम तो मिलता है, पर वो चीज बढ़ रही है अंदर, उसका मैं रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहा हूं। तो रेसिंग थॉट्स या किसी भी प्रकार के दुख का दूसरे आर्य सत्य के अनुसार क्या समुदय है? मेरी तृष्णा समुदय है। जब तक मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा, जब तक मैं अपनी तृष्णा को आइडेंटिफाई नहीं करूंगा। और तीसरा आर्य सत्य क्या है? उसका प्रहाण। उसका प्रहाण उससे मुक्ति है, सो जाना उससे मुक्ति नहीं है। सो जाना इज ओके, इट इज फायर फाइटिंग, दैट्स ओके। सो ध्यान से हम इस बात को सोचें। इट्स ऑल फाइन एज एन इंटरिम मेजर, बहुत दिक्कत हो रही है और मैं फायर फाइटिंग इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं। पर मेरा पूरा अप्रोच ही जीवन का, इसको क्लासिकली डिल्यूजन कहते हैं, है ना। जो शुतुरमुर्ग करता है ना, शुतुरमुर्ग का क्या तरीका होता है? शुतुरमुर्ग आप समझते हैं, ऑस्ट्रिच, जब वो बच रहा होता है अपने अटैकर से, तो क्या करता है? हाँ, धरती में सिर डालने से ही उसको दिख नहीं रहा अटैकर, इट्स नॉट द अटैकर इज गॉन। ध्यान से करें हम इस बात को, ध्यान से सोचें। हाँ दिव्यांग, एक मिनट। So antidotes are prescribed by the Buddha. That's fine. There's nothing wrong with using antidotes. But an antidote is not cannot become my standard way of dealing with life. एंटीडोट की परिभाषा ये होती है कि भैया बहुत दिक्कत हो रही है, जहर फैल गया, तो चलो मैंने एंटीडोट लगा लिया। हर समय मैं एंटीडोट ही लगाऊंगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए मृतक संतान सूत्र जैसे सूत्र पढ़ने का, सीखने का यही पॉइंट है कि जब रेसिंग हो रही है या जो भी, हम सब परेशान होते हैं, हाउ डू वी हैंडल इट बेस्ड ऑन व्हाट द बुद्धा इज टीचिंग अस। जी दिव्यांग बताइए, एक माइक है वहां, है, उसको दे दो। It's a perfect example. As I was telling you yesterday, right, what I did, because of which my professional life kind of goes down. It has been kind of not so good. So for the last 2 years, 2.5 years, and these thoughts are there, right?
these thoughts of why did I do it now? And then I again said, this guy is also responsible. And those thoughts are like crazy. And this thought that it gives rise to more thoughts that whatever I've got my work today in my current job, it is not good. That's again a negative thought. Then I'll again be fired. Then I'll not have money, right? These are racing thoughts. And as sir explained, I used to take sleeping as one of it. So I would get up in the morning, drop the kids, because my boss stays in Bangalore. I am in Delhi. Not much of work or whatever, right? I'll sleep in the morning at 10, 9 o'clock till whatever, 1 o'clock, and then come back and again sleep. I think I have been doing this for last 2 years. I am being an ostrich myself without addressing. Today, I have now realized that I'm not addressing the cause. I've been doing it for the last 2 years since the first time I was fired. And I've been doing it for the last 2 years, just thinking that this is what my way or this calms me down. जी, तो आपको कुछ insights आ रही हैं कि भाई मैं अलग क्या कर सकता हूँ? Absolutely. I think I've been to multiple places before. Is that if their thoughts don't give enough, I would say, time to those thoughts or don't appreciate those thoughts, but they still keep on coming. But I think the way that I have now looked at is those are thoughts and discipline and willpower. Willpower along with discipline, right? If I have to go to office, then I have to go to office from 9 to 5, get up, do this. That is most important thing to fight any thought, which is what you do actually. Not giving importance to the thoughts, but actually of what you do is something I think doing is important. जी, to reverse the thoughts. आप अगर देखेंगे ना, ये जो फ्रेमवर्क है ना, पर इस फ्रेमवर्क में जाने से पहले जो रोल विल पावर और डिसिप्लिन का है, उसमें कोई डिनायल नहीं है कि उसकी भूमिका है। पर अगर सारा मार्ग केवल विल पावर और डिसिप्लिन का ही होता, तो जो सबसे बलशाली व्यक्ति है वो सबसे खुश व्यक्ति होता। जो टूर डी फ्रांस वाले रेसर्स होते हैं, वो एक दिन में 250 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं पिरेनीज में, जो सबसे मुश्किल पहाड़ हैं। उनसे ज्यादा तो डिसिप्लिन और विल पावर किसी का नहीं है। एंड फनीली, at one time I used to myself be a cyclist, so I used to follow, है ना? Some of the best cyclists there turned out to be the most depressed. अन्य कारणों से, वो कारण दूसरे, वो कारण अगर हम सर्च करेंगे मिल जाएगा, हमारा भी उसी से वो है। बट फिलहाल हम इच्छा शक्ति पे हैं, मैं और मेरे का भाव, भाई मुझे ऐसा ही करना है, उसकी भूमिका है। टू स्टार्ट विद, देयर इज अ रोल फॉर दैट, बट द बुद्धा's path और एनी विजडम पाथ जहां पे हमें सस्टेनेबली ईजफुलनेस ऑफ लाइफ की तरफ जाना है, दैट विल ऑलवेज टेक यू बियॉन्ड डिसिप्लिन एंड विल पावर। इट्स नॉट टू से कि डिसिप्लिन एंड विल पावर जरूरी नहीं है, इट्स टू से कि डिसिप्लिन एंड विल पावर अकेले का मसला नहीं है। एंड दैट इज व्हाई सुत्तास लाइक दिस, अगर आप इसमें देखें, है ना, भाई देखो, अगर सिर्फ डिसिप्लिन और विल पावर की बात होती तो ग्रेट पर्सन लाइक बुद्धा वजह से हाँ भी सब लोग जोर लगाओ, ये नहीं कह रहे हैं। देख रहे हो आप, है ना? आप नंबर 2 देखिए, रिफ्लेक्ट ऑन डेंजर। अगर मैं ऐसे ही करता रहा, मेरे बच्चे अब इतने बड़े हैं, इनकी शिक्षा का क्या होगा? मैं उदाहरण दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी रिफ्लेक्ट। अगर मैं यही करता रहा तो संभवतः मेरी क्षमता अपने परिवार को देखभाल करने की, करियर में आगे बढ़ने की, जो भी मेरी आकांक्षाएं हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा।
उसका क्या असर होगा, उसका इन नन्ही जीवों पे असर होगा जिनके लिए मैं जिम्मेदार हूं, कम से कम बायोलॉजिकली तो मैं ही जिम्मेदार हूं, है ना, मे बी कार्मिकली आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल बट बायोलॉजिकली मैं ही जिम्मेदार हूं। अब दीज आर वेज, ये तो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, है ना, हम और डिस्कस कर सकते हैं, बट रिफ्लेक्टिंग ऑन डेंजर इज दिस। और रिफ्लेक्टिंग ऑन डेंजर का क्या मकसद है? अपने आप को भयांत करना नहीं है उसका मकसद। उसका मकसद मन में वो वीर्य, वो एनर्जी और वो दिशा, है? छंद और चित्त जो इद्दीपाद है ना, वो पैदा करना है। ओ नो 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 नो, ये मुझे नहीं करना, यहां नहीं जाना है, चलो लेट मी गो टू ऑफिस, और वट एवर इट इज। या जैसे रिप्लेसमेंट वाली बात आई, है ना, जो गुस्से वाली बात है, अभी आप नहीं थे तब मैंने एक एग्जांपल दिया एक सज्जन का, जिनके साथ ऑफिस में यही दिक्कत हुआ करती थी, है ना, एंड ही यूज्ड अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी टू अटेम्प्ट टू replace his aversion for his office colleagues with at least a degree of tolerance, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत उसको प्यार हो गया सबसे, नो 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 नो, बट चलो चला लूंगा मैं काम। सो देर इज अ पॉइंट ऑफ दिस होल थिंग। और जब हम मोनेस्ट्री में आते हैं या जब हम टीचिंग्स पढ़ते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं, हाउ डू आई सिचुएट दिस इन माई लाइफ, क्योंकि टीचिंग तो सिर्फ बुक शेल्फ में रखने का तो कोई खास मतलब नहीं है। सो वी कैन टॉक मोर इन डिटेल, बट कुछ हमारे में भ्रम होते हैं ना कि बस केवल डिसिप्लिन का इशू है। हाँ, डिसिप्लिन का बहुत रोल है, बट केवल डिसिप्लिन का इशू नहीं। दूसरा, जो हमारे पॉपुलर नोशंस होते हैं ऑफ बीइंग एबल टू डील विद डिफिकल्टीज, लाइक जैसे मनीष एग्जांपल्स दे रहे थे, है ना, श्योर श्योर they can have a little role. It's like in the complex treatment that doctors like Renuka do, paracetamol has a role, but that's not the only thing they use. As an example, sorry I keep using that example again and again. तो हम जरा ध्यान रखें सभी के लिए। सो वी आर ग्रेटफुल कि मनीष और दिव्यांग के माध्यम से हम सब, क्योंकि ऐसी टेंडेंसीज हम सब में है ना, पॉपुलर है ना, एक इंटरनेट पे बुद्धा कोट्स चलते रहते हैं, भगवान ने कहा था, भगवान ने जो चीजें कही थी वो हमारे सामने हैं, लेट्स स्टडी देम एंड देन ट्राई टू अप्लाई देम टू आवरसेल्व्स रादर देन पुट वर्ड्स इन द बुद्धा's mouths, है ना, बट वी कैन डिस्कस मोर। जी, do you want to go to 3 first? Explain number 3 first. Yeah, just also relating to what Bante Mahapanyo just said, that really the way those 5 strategies appear in the sutta, basically it appears like this. In case some thoughts of greed, hatred, or delusion arise in the practitioner's mind, then one tries to apply the first strategy, replacing with a wholesome thought. And he gives the simile and so on, but then he said, but in case it doesn't work, in case the unwholesome thoughts, the thoughts of greed, hatred, and delusion don't subside, which can happen sometimes, this tool is not yet fully developed, or it's not the right thing, it's not effective enough to the situation. Then one try the second one. One reflect on the danger, and he gives the explanation and the simile, and he says, then one see those thoughts leading to my long-term harm and suffering, and to the long-term harm and suffering of others, and to the long-term harm and suffering of both. And this is enough for him to make those thoughts subside. But in case it doesn't work, because it also may not work at certain situation, then one try the third one, and so on. So this basically a bit of a realistic understanding that it may be that at certain point, a certain technique will not work. It's not like a magic. One has to develop these tools to practice them. And in case one doesn't work, one try another one. And sometimes one use several ones just on one situation, and each one helps a little bit. Maybe that at certain times there is a great quarrel or a conflict with another person, and then one try to think about
the fact that he has children and so on, it softens a bit, but it doesn't go completely. It's still there. And one tries to go back to his breath because he's used a bit to focus on his breath. It sometimes helps, but not all the time. One tries to think of the danger. Yeah, it will lead to a harm. If I really quarrel with him, I might lose my job, my children will suffer, and so on. And it helps to sometimes, but not all the time. So actually, in reality, we use more than one many times just to be practical. And it's good to have all of them developed. And actually, there are also other tools which don't appear in this list. For example, a bit what Bhante Mahaprabhu said, it's not enough just by controlling or fighting or discipline. Oftentimes, one needs also to have some vision, some goal, something to live for. So one go to office, it's also important to have a vision. Okay, what could I accomplish in 10 years? What will be the best thing I could do? I'm still healthy, I can still do things. Let's see, how would be the best vision that I can have in 10 years about my children, about my wife, about myself, about my skills that I will learn, about spirituality. And this also gives a great balance. Then there is a reason, actually, when one tries to apply those methods, it kind of have a certain oomph, a certain power to it. One knows that it leads to what one really wants. Otherwise, it's just kind of fighting with negativity and one kind of dries up. So it's also important to have some positive vision. Thinking about the Buddha or thinking about metta, about our love for other people is a great source for vision. There is something to live for the sake of the other people, for the sake of my future, maybe birth, my future journey in samsara. So actually there is no way out. There is no shortcuts. I have to continue to fight until eventually I reach the best goal. Yeah. So this is also important. मेरे ख्याल से एक चीज हम क्लैरिफाई कर लें जरा कि ये जो सूत्र है ना वितक संधान, हम इस गलतफहमी में ना रहें कि दिस इज द बुद्धाज फंडामेंटल टीचिंग ऑन डीलिंग विद सफरिंग. ऐसा नहीं है. द बुद्धाज फंडामेंटल टीचिंग ऑन डीलिंग विद सफरिंग इज द नोबल ट्रूथ्स. वो हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं. These are basically firefighting measures. So in life, like Anvajoji was saying, it is never कि बस एक चीज काम करेगी. It's always a combination. But the principal path to freedom from suffering and the simplest framework is given to us by the Four Noble Truths. और उसमें जो अप्रोच है सफरिंग की वो इससे उल्टी है. That is to, like Sumedoji says, first of all to understand suffering. और अजान सुमेदो कैसे बताते हैं? You stand under it. उसको हम पूरी तरीके से झेलें, एक्सपीरियंस करें पूरी तरीके से. उससे हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें. पूरी तरीके से हम उसको एक्सपीरियंस करें शरीर में, मन में, और देखें कि अच्छा ये दुख होता है. फिर पहला ना फर्स्ट नोबल ट्रूथ. सेकंड नोबल ट्रूथ क्या है? जब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो क्या समझ आएगा? सामने क्या आएगा जी? क्योंकि सेकंड नोबल ट्रूथ ये है कि दुख का कारण मेरी ऑफिस या मेरे विचार नहीं है. मैंने किसी चीज को कस के पकड़ के रखा है ना. तन्हा तृष्णा है मेरे दुख का कारण. और फिर मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूं उस तृष्णा के प्रति अपना रवैया हल्का करने का. तो ये तो फंडामेंटल. और इसका तरीका क्या है? अष्टांगिक मार्ग है ना, फोर्थ नोबल ट्रूथ है. सो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट्स द फंडामेंटल टीचिंग. पर क्या होता है कि कई बार दुख जो है वो हमें, या जो परेशानी है वो हमें ओवरवेलम करती है. हम सबके साथ होता है ना. तो सुत्ताज लाइक वितक संधान जो है वो हमें, जब हम ओवरवेलम हो रहे हैं तो इट्स अ वे ऑफ फायर फाइटिंग. So these things go in combination. It assumes कि हमें भगवान की शिक्षा की विशद जानकारी है. Diversity of the teachings have been understood so that under different circumstances we know what to apply. है ना. हर जगह एक ही फॉर्मूला हम चिपका देंगे तो फिर नहीं होगा, फिर ये दिक्कत आएगी. Just to be clear कि doctrinally this is the position.
So maybe can explain number 3 and Or maybe we go to number 4 already, or number 4. Okay, we go to number 4. So number 3, as we may observe, is something that we are all familiar to some extent, a bit quite similar to samatha practice, basically withdrawing from thoughts, coming back to something else, for example, breath, body, mantra, whatever. And it's a bit like basically withdrawing our sights from a certain unpleasant or unwanted vision. And this reduces the power of that sight, or reduce the power of that thought to some degree. Later on, it will come back again. We can again abandon it. But it's usually not enough to completely overcome the thought. Usually, if you have a certain pattern, it will be also helpful to reflect on the danger, to replace it with a wholesome thought. Now, number 4, calm the thought formation. Gradually slow and settle the mind. There is a simile. For example, suppose there was a person who walks quickly, and then he asks himself, why am I walking so quickly? It's tiring. Why shouldn't I walk slowly? Then he walks slowlier. He walks slowlier and he's like, why do I do this effort? Why shouldn't I just stand? Then he stands. Having stand, he asks himself, why do I stand? I can sit. Then he sit down. Having sat down, he asks himself, why shouldn't I lie? Then he lies down. So in the same way, one can also calm the thoughts bit by bit, gradually. One interpretation that I read to this strategy is calming the triggers of the harmful thoughts and calming the causes of the thoughts. So for example, one has a certain thought, one is angry at another person. One can ask himself, why am I actually angry at him? What do I get from it? Why do I walk so quickly? What do I get from walking so quickly? What if I would be more peaceful with him? Or what do I get from it? And one realizes, actually, if I angry at him, it makes me feel I'm right, he is wrong. It makes me feel great. It makes me feel I'm a victim. It makes me feel he's an evil. It strengthens the ego. One observes it and one feels actually it's not what I really want. I want to actually be peaceful. It doesn't make me settle down. It makes me just agitated. What if I just calm it down a bit? Then one see, okay, where does this triggers come from? It comes when I think about what happened to me recently, what happened yesterday. He told me something. So one say, okay, whenever the thought arises that he did something to me yesterday, this whole agitation arises. This is where the danger is. So I calm down, okay, whenever this cause of the turbulence arises, I change it. Okay, he said something to me yesterday, but I don't have to get agitated by it. It's unpleasant to be agitated. It's unpleasant to just walk fast and so on. Or it may be I think, okay, it's because last month he gave a promotion to the other guy beside me. Now, whenever this thought arises, I get agitated. No, let me just think, okay, this is the trigger. Now I just bring it to mind. Yes, he did give a promotion to the other guy. I just see it, but I don't have to get agitated by it. I accept it because it is unpleasant to get agitated. So this is one interpretation to this technique, basically to look to the very triggers, to the place where the fire comes up. They say, okay, why do I need to get agitated? It's unpleasant. Seeing this unpleasantness in agitation, preferring settlement, calm. Gradually, one comes down when one finds all those different triggers. One knows what pushes my wounds in such a way that I feel I cannot hold it, and then one burn into kind of
infection. No. I know now all the triggers, but when they arrive, I'm ready, I calm down. I don't want to be agitated. This is one interpretation. So, so basically, for all those who, for myself, I speak. हाँ, तो कभी ऐसा कोई थॉट जैसे जो इतना इंटेंस है, जो सुसाइडल भी है बेसिकली, तो उस इंटेंस थॉट को डील करने का मतलब जो मैंने सीखा है, जो मैं कर रही हूँ, वो है उसको 3 भाग में डिवाइड करना है बेसिकली मैं करती हूँ। पहले तो है कि जो बहुत इतना इंटेंस अगर किसी के दिमाग में ऐसा थॉट आया है तो इसका मतलब वो, और जो सुसाइडल और इस तरह की प्रवृत्ति लेके आता है, तो उसमें मुझे लगता है पहले भाग में ब्रेक लगाना इज अ फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि आप पहले उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की बहुत जरूरत है। फिर सेकेंड पार्ट में मैं कोशिश करती हूँ कि वो बस उसमें किसी तरह का और एग्रेशन ना रहे या और फैले ना, और तीसरे भाग में मैं उसको उसमें उसका एनालिसिस करके उसका तृष्णा जानकर उसको फिक्स करने की कोशिश करती हूँ। तो पहले वाले में बहुत जो बहुत इंटेंसिटी से आता है और जिसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाता है ऐसी मेंटालिटी के लोग, और जो उसको सुसाइडल का रूप भी मिल जाता है, तो मुझे लगता है ब्रेक लगाना एक बहुत बड़ा फेज होता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत बड़ा फेज होता है। तो उस ब्रेक लगाने का मतलब होता है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए उस टाइम पे कुछ नहीं करती हूँ। वो बहुत मुश्किल है वो चीज करना, लेकिन बस कुछ नहीं करते और उस पेन को, उस इंटेंसिटी को पूरा फील करती हूँ कि हाँ परेशान हो रहे हैं तो परेशान होना है ऐसा। सेकंड पार्ट में बाकी जो लास्ट पार्ट है बेसिकली उसमें ये है कि जो हमें अभी जो देख रहे हैं जो टीचिंग्स है ये, तो हाउ डू वी, फॉर एग्जांपल एज वी सॉ द सेकंड वन, जिसमें कि यू बेसिकली लर्न कि कैसे वो डेड स्नेक वाला दैट यू हैव टू थ्रो इट आउट, तो वो सब सीख कर एंड देन लास्ट स्टेज में यही है कि कैसे फाइंड आउट करना कि क्या चीज को पकड़ कर रखा हुआ है या फिर ना तृष्णा किस चीज की है, और सो दैट वो नेक्स्ट टाइम जब वो घटे तो बेसिकली थोड़ी नॉलेज लेके घटे। ये तो नहीं होता मेरे साथ कि नेक्स्ट टाइम वो घटता है तो मैं उसको पूरा डील कर लेती हूँ, पर नेक्स्ट टाइम वो कम इंटेंसिटी से आता है। वो कम इंटेंसिटी से इसलिए लगता है क्योंकि जब वो आया तो थोड़ा उसको उसकी पहचान हो गई है कि वो हो गया था सॉल्व, वो ऐसे था प्रॉब्लम, तो वो शायद इतना बड़ा रूप नहीं लेता। तो इसी तरह से करके जो बहुत इंटेंस इंसिडेंट्स हैं वो करीब 1 2 3 ऐसे ट्राइज में चले जाते हैं, डिसअपियर होते हैं और वो नहीं आते दोबारा। आते भी हैं, मतलब इंसिडेंट्स तो घटते रहेंगे, बट वो जब आते थे तो अब वो नॉर्मल इंसिडेंट के रूप में आते हैं, उसको डील करने का तरीका पता है। तो बट बेसिकली अगर उसका नेचर जानो तो वो कभी बहुत इंटेंस थॉट था, तो इस तरह से करके वो नॉर्मलाइज होता है। मैं अभी कोशिश इसी की कर रही हूँ अभी आजकल। थैंक यू। So we have another something. There's no other way. Uh-huh. So then we can go on. That doesn't seem to be. प्रतिभा जी, जो आपने अभी यूज किया था अप्रोच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर करियर चेंज में भी, अगर आप वो शेयर करें तो शायद हम सब सीख पाएंगे उससे, खासकर की जो पहले की धारणाएं थी और फिर उनको कैसे सस्पेंड किया और कैसे अपने आप को वो करने के लिए कोक्स किया जो कि शुरू में मन नहीं करने दे रहा था। वो शायद मददगार रहेगा। वही मैं आपसे जिक्र कर रहा था उस दिन। जी, तो जो करंट जॉब था उसमें वो बहुत टैक्सिंग था, बहुत ज्यादा। उसमें लेट नाइट यूएस शिफ्ट में काम करती थी मैं, और फिर उस पूरा काफी साल उसको लेके इश्यूज रहे, मेडिकल इश्यूज रहे। फाइनली एक ये स्टैंड लिया कि कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के बाद मतलब कुछ ऐसा एम्प्लॉयमेंट ढूंढना है जो मेरे लिए ठीक हो, जो मेरे
करंट सिचुएशन के अनुकूल रहे, उसके साथ जाए बेसिकली। तो फिर पर धारणा ये थी कि क्या अब ऐसी चीज ही चुनूं खाली कि जो ये है। इतने सारे थॉट्स एक्चुअली आते थे कि नहीं ये सूटेबल नहीं है मेरे लिए, तो ये वाला ठीक है। बट ये थॉट को थोड़ा पार्क करके फिर मैंने सब जगह करना शुरू करा कि आता है जो ऑफ कोर्स मेरी प्रोफाइल से मैच करता था, और जो आता गया और देती गई बिना कुछ ओवर थिंक करे कि कैसा सूट कर रहा है मेरे जॉब प्रोफाइल पे, कितना पसंद मैच है नहीं है। और फिर इस पे कर दिया कि जब आएगा तब वी विल सी। अब बेसिकली उस चार्टर को नहीं एड्रेस किया, और फिर उसका ये हुआ सोल्यूशन, उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं थी मैं ढूंढने में, जो आता गया करते गई। और आए भी जो भी आया बेसिकली वो एप्ट आया, उसके अकॉर्डिंग आया, और शायद मैंने जो सोचा भी नहीं था उससे भी अच्छा मिल गया मुझे। और फिर वो इतना स्मूथली गया सारा कुछ प्रोसेस पूरा कि उसमें ये थॉट भी नहीं आया दोबारा कि मैंने इतने कंडीशंस लगाए थे कि ये नहीं करना है, वैसा नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ नहीं अप्लाई करूंगी, इसलिए वहां नहीं करूंगी। फिर फाइनली जब जो ऑफर आया वो जब उस पे भी आया तो भी वो डाउट था हमेशा कि ये है भी कि नहीं है। बट लेकिन जो चीज फिर कभी सोची भी नहीं थी वैसा ही ऑफर आ गया, मतलब आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे यही सीखने को मिला मुझे कि इतने कंडीशंस नहीं लगाए, इतना ओवर थिंकिंग नहीं किया उस पे, और जैसा आता गया एक वेंट विद द फ्लो। और या किसी की कोई सवाल, प्रतिभा जी को, या टिप्पणी? आपको समझ आएगा उन्होंने क्या कहा? तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही जो पार्टली इस सूत्र में है। क्या अलग किया उन्होंने? व्हाट वाज द शिफ्ट? फंडामेंटल शिफ्ट क्या था? सिचुएशन तो ये थी, मन तो ये कह रहा था कि यार ये मत करो, ये नहीं होगा, पहले नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं होता। वो तो सिचुएशन तो ये थी। क्या चेंज किया? क्या करके? पूर्व धारणा को कैसे खत्म किया? मेरी पूर्व धारणा तो खत्म ही नहीं होती यार, मेरी पूर्व धारणा तो लगी हुई है मेरे पीछे। हाँ हाँ हाँ। जो भी आता गया वो पेश करते गए, और कोई कंडीशन नहीं लगाया, और इवेंचुअली टेक्निकल तरीके से समझे जो भगवान की शिक्षा जो सूत्र हैं, आपको पता होगा कि इद्धिपाद है ना, बेसिस ऑफ सक्सेस है। उसमें पहला इद्धिपाद क्या है? पहला बेस ऑफ सक्सेस क्या है? किसी भी एंटरप्राइज में, किसी भी काम में अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो उसका पहला कारण, उसका पहला बिंदु क्या है? इद्धिपाद से आप परिचित हो ना जितेंद्र? क्या है पहला, बताओ। नहीं, अच्छा, कौन है? इद्धिपाद, हाँ, इच्छा का, इच्छा टेक्निकल शब्द क्या है? सही बात है, इच्छा है। क्या है? छंद, एग्जैक्टली। मोटे मोटे तौर पे मेरा पर्पस क्या है भैया, वो तो क्लियर हो, है ना? सो व्हाट व्हाट आई एम हियरिंग शी इज सेइंग, व्हाट शी शिफ्टेड इज कि द फोकस, द अटेंशन बिकेम अटैच्ड टू द पर्पस। भैया पर्पस ये है कि मुझे क्या यूएस टाइम को छोड़ना है वगैरह वगैरह, है ना? दैट वाज द थिंग कि रात की शिफ्ट मुझे नहीं करनी है। बेसिकली जहां तक मुझे समझ आई है घूम फिर के वो कहानी थी। तो अब क्या हो रहा था कि क्या मन कैसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था? जो अन्य अन्य पूर्वाग्रहों के आधार पे विचार थे, उनको वो विचार उठ रहे थे। यही हो रहा था ना। उदाहरण के तौर पे कि ऐसी प्रोफाइल नहीं होती, ऐसी प्रोफाइल में ऐसा ही होता है, या ऐसा नहीं हो सकता है, या इसमें क्या क्या कहते हैं, मुझे कट लेनी पड़ेगी, या जो जो भी बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। बहुत सारे थॉट आ गए थे क्योंकि 20 साल आप उसमें हो तो आप उसमें बहुत इफ बट्स लगा लेते हो फिर। ठीक है, तो ये सब विचार चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं। वो क्या कर रही हैं? उन्होंने अपना अटेंशन फिक्स किया अपने छंद पे, मकसद पे। यार मकसद मेरा ये करना है, वर्सेस गेट कॉट विद ऑल दीज
एक्सटेनियस चीज है ना, जैसे जितना मुझे समझ आ रहा है। फिर उन्होंने एक और चीज की, यहाँ देखिए जो नंबर 3 पर है, उन विचारों को ध्यान देना, अटेंशन देना छोड़ दिया। ठीक है, चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं। और आप देखेंगे, ये तो टेक्निकल बात है कि अगर मनसिकार नहीं होगा, अटेंशन नहीं होगी, तो फिर वो विचार नहीं उठेगा फिर नेचुरली, है ना। विज्ञान के उठने का एक फैक्टर इज अटेंशन। सो ऑल दैट शी इज डन, कोई एक तरीके से पहाड़ तोड़ा भी है, बट एक तरीके से पहाड़ नहीं भी तोड़ा, ये हम सब कर सकते हैं। तो इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग पीपल टू शेयर, ताकि हम सीख सकें, हाँ तो मेरे साथ भी होता है। एंड इन सम सेंसेस इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इन सम सेंसेस आल्सो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, अगर हम भगवान की शिक्षा के फ्रेम को यूज करें, है ना। अब नाउ बी केयरफुल, वी शुड नॉट अज्यूम कि हाँ हाँ मैं करता रहूंगा तो मुझे भी वही रिजल्ट मेरे प्रतिभागी को मिला, नॉट नेसेसरी। वो जो आउटकम्स हैं वो पूरी तरीके से मेरे एफर्ट पे कंडीशन नहीं है ना। प्रमुख रूप से वो उसके जो उसके फैक्टर्स जो उसको कंडीशन करते हैं वो बहुत सारे हैं। ये तो मैं पता ही है, मल्टीपल कॉजेज होंगे और मल्टीपल आउटकम्स होंगे, है ना। तो उस भ्रम में हम नहीं पड़े। ठीक है, हम इनके लिए मुदिता रख सकते हैं कि भाई इनके लिए वैसा रिजल्ट निकला। पॉइंट ये है कि अप्रोच क्या है, अप्रोच ये। दूसरी चीज आई थिंक इंपॉर्टेंट टू मेंशन, क्योंकि आप द फर्स्ट टाइम आई हर्ड यू से दिस, ये सुसाइड वाली आप बात कर रही थी, है ना। भाई अगर हम में से किसी को भी सेल्फ हार्म के विचार आते हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि इसको मेडिटेशन से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, ये एक गंभीर विषय है, और अगर वास्तव में लगातार ये चीज बार बार उठ रही है, तो किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करना अनिवार्य है ना, उसमें हम क्वैकरी ना लगाएं। ठीक है ना, ये बहुत अवधारणा है कि जी मेडिटेशन से सब चीज सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खास करके अगर सेल्फ हार्म के लगातार विचार हैं, देन प्लीज, अगर जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, प्लीज बी केयरफुल, प्लीज डोंट इंडल्ज इन एडवेंचरिज्म, बट कंसल्ट अ प्रॉपर प्रोफेशनल, है ना। इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सो वी कैन इधर फिनिश और कंटिन्यू, आपके ऊपर है। हाँ, आखिरी वाला सुन लेते हैं, और अगर ज्यादा हो रहा है तो खत्म भी कर सकते हैं। लास्ट वाला, हाँ बहुत हो गया कि अब आखिरी देखें। So the last point, and it's worth mentioning right at the beginning that this technique is really the last resort that the Buddha recommends, only if all other methods have failed. So what this technique involves is forceful restraint of the mind. So really, what we might call in modern psychology, suppression, essentially pushing away the negative thought with all the force we can muster. And the simile that the Buddha gives is that it's like a large, strong man holding down and restraining a weaker man. So we can already see from the simile that this is quite a forceful action. It involves effort and willpower, as we were discussing. And this is really not a solution we can see. This isn't something that's going to get to the root of the issue that we're dealing with, but sometimes it is what is necessary. I think especially in cases, for example, when we find ourselves about to act on a negative thought. For example, let's say someone is an alcoholic, struggling with alcohol their whole lives, and they've been sober for a while, but suddenly they find themselves outside of a bar and they feel this powerful pull to just go inside and have one beer. What harm can it do? Just one beer. And the thought is so attractive and so powerful. And okay, let's say this alcoholic is a meditator. They try to distract themselves. They try all the other techniques, but nothing works. They still see the image of the cold beer coming up.
in their minds. So sometimes what it takes is just simple force to just really take oneself by the force of one's own mind and say, I will absolutely not do this. I will not think this thought. I will not take this action. And it's a short-term solution, but it's actually very important to remember. If we find ourselves on the verge of an unwholesome, dangerous action, sometimes we need to restrain ourselves by force. ये विल पावर वाली बात, ये वाली, पर आप देख रहे हो ये केवल आखिर में आया. वेरी इंटरेस्टिंग. और इट्स इंटरेस्टिंग इन टू वेज. हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी और जो भगवान की मन की समझ है उसमें काफी फर्क है. आप देख रहे हैं, ही इज इवन रिकमेंडिंग, जैसे तिसरो जी कह रहे हैं, सप्रेशन. तो वो भी एक दुरुस्त उपाय है. ध्यान ये रखना है कि हर समय में उसको ना उपयोग करूं, ये है. तो उतनी प्रज्ञा और सती और प्रज्ञा एक बेसिक लेवल की हम एज्यूम कर रहे हैं, पर ये विल पावर वाली बात ये वाली थी, वो भी दुरुस्त है. अब प्लीज इससे हम ये गलत निष्कर्ष ना निकालें कि जैसे कुछ दिक्कत आई मैं ये लगा दूं. ऐसा नहीं. हर स्थिति के अनुसार मुझे चुनना है कि क्या करना है. और जैसे मैंने बताया, मूल दुख से मुक्ति का जो ढांचा है, फ्रेमवर्क है, वो 4 आर्य सत्य का फ्रेमवर्क. ये सब फायर फाइटिंग है जो आज बात हो रही है सारी, और बहुत महत्वपूर्ण है. फायर फाइटिंग होना बहुत 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 जरूरी है, वो स्किल्स होना. पर हर जगह फायर फाइटिंग नहीं लगानी हमेशा. ये समझ भी होना उतना ही जरूरी है. मैं तो भूल ही गया, आपने शेयर नहीं किया आपका वो एग्जाम्पल आपका कामिंग द थॉट फॉर्मेशन जो वहां हुआ था जब अपन ने बात की थी. याद आया? बताओ बताओ, आप इतना अच्छा एक्सप्रेस करते. दो माइक दो उसको. हाँ, पर मेरे पास एक बेटर एग्जांपल है चलो. जिसमें फर्स्ट वाला का. चलो लेट्स लिसन टू शौर्याज एग्जांपल्स. हाँ, हिंदी में बताना. हाँ, तो फिर मैं अपना फिर से एग्जांपल एक ही बताऊंगा. जो मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, तो फिर मेरा एक मैच होगा आज ही. लेट्स सपोज मेरा मैच है, तो फिर उसमें मुझे ये लग रहा है, मेरे थॉट्स ये आ रहे हैं कि अपोनेंट इतना अच्छा खेलेगा, अगर मैं नहीं जीत पाया ये हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, एवरीथिंग. बट फिर मैं फिर उसको रिप्लेस करके ये सोचूं कि उस टाइम पे स्कोर में अगर मैं ये सर्विस करूंगा तो फिर मुझे ये पॉइंट आएगा, और गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स लाऊं जो मुझे हेल्प करेगा उस मैच को कन्वर्ट करने में या फिर अच्छे से खेलने में, तो फिर वो बेटर है. बस यही था मेरा मतलब रियल लाइफ एग्जांपल. टेबल टेनिस. डीप ब्रीथिंग. ओके. हाँ, ओके. हाँ, याद आ गया. तो फिर बहुत सारे रश ऑफ थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे कि ऐसी ऐसी बहुत सारे थॉट्स है कि जैसी नेगेटिव थॉट्स. तो फिर उसको ही मतलब इतने सारे थॉट्स थी कि एक बहुत डीप ब्रेथ ली और धीरे धीरे रनिंग से वॉकिंग करा अपने माइंड का, फिर सिटिंग एंड देन लाइंग डाउन, मतलब बहुत स्लो कर दिया. और फिर मन बहुत शांत हो गया, जिससे बहुत इजी हो गया जो भी मतलब मैं कर रहा हूँ. मतलब हाँ, ये एक चीज थी जो शौर्य और मैंने साथ की थी एक समय, पर उसमें एक चीज रह गई थी. उसके बाद जो करना था, यही होता है हमारे साथ, है ना. इफ यू टेक द पैरासिटामोल, अरे सब ठीक है जी, अभी लो, बैक टू नॉर्मल, है ना. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी जो फायर फाइटिंग है जो कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कई बार की है, उस फायर फाइटिंग के बाद मुझे फायर प्रिवेंशन के सारे बीज बोने हैं. मैं सारे जीवन फायर फाइटिंग नहीं कर सकता हूँ. दैट वाज द एंड मे बी स्टिल द मिसिंग लिंक, है ना. ये क्राइसिस तो अवर्ट हो गई, मैच हो गया. ये हम सबके साथ होता है. तो वी आर ग्रेटफुल टू शौर्य, ही इज शेयरिंग, बट इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस. जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वाली बात है, हम हमेशा अर्जेंट वाले में ही लगे रहते हैं. बट ऑल्सो वेरी गुड
गुड इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नंबर 3 का, है ना, कि उन्होंने उसको 3 का या 4 का है, हाँ 4 का है सॉरी, और उन्होंने उसको फिजिकली किया था बाय चेंजिंग द डेलिबरेटली चेंजिंग द ब्रेथ पैटर्न टू वेरी डीप slow breath. So naturally that also has an impact on how fast things are going. But again, to be careful, okay, these are only just kushal upay, expedient means. These are not fundamental freedom from suffering. जी महेश को दो भाई, दे उनको दो. क्वेश्चन ये था कि नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं कई बारी बहुत इंटेंस होते हैं और कभी कभी बहुत लाइट होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, सटल होते हैं. सो ये जो स्ट्रेटजीज है, ये इंटेंस थॉट जो आते हैं नेगेटिव, उनको ओवरकम करने के लिए है क्या? We have two types of negative thoughts. One are very intense, very obvious, very gross. The other are more subtle. There's a little stream going on in the background. So this framework applies to which? That's You can give life. It can be applied to both. It's good to differentiate between things that are repeated and things that are just coming once or twice, or between things that are very intensive and less intensive. So obviously, as a general strategy, it's important to address, first of all, those that are very intensive. Because before you really address them, you will be swollen by it anytime. You cannot really solve the more subtle problems. Let's say some people want to achieve some very deep, calm state of mind through meditation. So when they sit down, and the next day they will have a fight with their boss or with their spouse, shout at them and take a knife, and then they go back in the evening and say, now I continue my practice. I will sit down. Maybe I will attain some jhana. It doesn't really work. Yeah. First of all, Panchasil is giving kind of a certain standard which helps to reduce the most intensive states. Then if there is a particular intensive occasion, turbulence, one has to address it. One may try to meditate, but these things will just come up whenever one tries to get very calm. So one observes something very intensive, something that repeats itself, one has to address it, particularly, first of all, knowing. It's a bit something that I think we mentioned yesterday. Just to acknowledge that you have a certain problem or a certain, you're stuck somewhere is already a progress. Just being aware of it is already a great step forward. Then one investigates. You say, okay, I'll try applying a skillful mean, wholesome thoughts, changing the thought a bit, maybe doubting the thought. One try. If it doesn't work, one try to see the danger. One remind himself, okay, I'm already stuck in this turbulence for 1 week. Do I want to get stuck with it all my life? What will happen if I actually act on it? If I don't, if I'm not careful, if I not overcome it, it might get even stronger. I might act of it. Suppose I really take the knife, what then? You know, I will go to prison. And say, how did I come to that stage, you know?
is it really me? So one is disgust with this kind of thing, like somebody who recognizes, how did I reach that far? How do I have a corpse of a snake around my neck? So once one observes this kind of most intensive things, one has to address them. If one feels that one made a progress, one then can cultivate the mind, go to a more wholesome state. One has a certain goal, one wants to develop samadhi, okay. Then some subtle problem may arise. The thoughts go again and again to normal things. What did yesterday? What should I do tomorrow? What if that person did? Why didn't do it other way? So actually there is a good simile also for that. The Buddha said it's like purifying a gold. First of all, you take the grossest impurities. Like you take the big stones, then you take the gravel, then you take the sand out of the gold, then you take the dust of the gold. Then you melt it. Having melted it, you make sure it is in the right temperature, you sprinkle some water, you make it a bit red to some point, until it's really purified. Then you make jewels out of it. In the same way, with the mind, we may have very intensive problems. First of all, we have to solve them. Just trying to melt the gold when it's completely impure will not create any jewel eventually. First of all, you take it out. Then you cultivate, you observe. Subtle problems arise. The more you practice, you observe the subtle problems. You overcome them, you try to calm down, you observe even more subtle problems. This way you progress until eventually mind is calm. Okay, beautiful. I think that is a beautiful summary of our discussion today. So, yes, all we've been talking about is to do with this exact process of purification, purifying our minds, purifying our hearts, so that we can progress on the Buddha's path. And as Bhante Mahabanyo reminded us, these 5 tools that we were discussing today are simply one aspect of the effort that we need to make in this process of purification. And they all come within the greater context of the teachings and of the whole path. And that's one of the beautiful things about the Buddha's teaching, that it's so broad and there's so many different angles and ways to look at it, many different tools and stories and similes, that as we grow and learn more and more, we can find those that work best for us, that resonate. And also, as we heard today, we're not going to find one magic, one size fits all solution. As our experience grows and we get to know ourselves better, we'll develop different strategies that will involve the combination of different approaches depending on our particular situation. So anumodana to everyone for sharing so beautifully and honestly from your experience. I think it really, really helps a lot to hear from each other, to be reminded how we're all struggling with very similar problems. It really helps open the heart and give us all encouragement that we're practicing together. Can turn into close this. But if we still want smaller groups or discussions to continue, you can still do that in the family. So we close the session where this was a very large तो ये पहले वाले पॉइंट का था कि रिप्लेस विथ होलसम थॉट्स। मतलब मेरी कंडीशनिंग ऐसी हो गई थी किसी वजह से कि मैं हर इंसान को जजमेंटल के एटीट्यूड से देखता था, ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट भी अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन कि मुझे वो ब्लैक एंड वाइट लगता है, और मैं हमेशा वाइट लोगों के साथ प्रीफर करता था और ब्लैक को साइड करते जाता था, और मुझे लगता था ये अच्छा काम है, कुशल काम है, यही बुद्धिमानी है इस टाइप का। लेकिन बाद में ऐसा समझ में आया, इससे मेरे अंदर
उन ब्लैक वालों के लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा द्वेष बढ़ता जा रहा है। तो मैंने इसके लिए दो तरीके निकाले कि पहला तरीका ये कि ये एक्सेप्ट करना कि हम सब में ब्लैक एंड वाइट दोनों हैं, कॉम्बिनेशन किसी का कुछ है किसी का कुछ है। तो ये एक्सेप्ट करना कि ब्लैक एंड वाइट है, पहला ये। दूसरा ये, वो जो ब्लैक एंड वाइट भी है वो उसकी वजह से नहीं है, उसको खुद को भी नहीं पता वो कंडीशन वो कहाँ से आ रहा है। तो जब भी मैं किसी इंसान को अब कुछ समय से ये प्रैक्टिस करता हूँ मैं, कि जब भी किसी इंसान को देखता हूँ मेरे मन में कुछ द्वेष आता है या कुछ ऐसी भावना आती है जो गलत होती है, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो भी रोबोट है, मैं भी रोबोट हूँ। वो भी एक प्रोग्राम्ड है, मैं भी एक प्रोग्राम्ड हूँ। और मैं रोबोट दूसरे रोबोट से लग रहा हूँ कि या उसको जजमेंट कर रहा हूँ, तो ये तो मूर्खता है, ऐसा टाइप का। ये मेरे लिए काम किया। मुझे नहीं पता कि ये पहले वाले में फॉल करता है कि नहीं करता, लेकिन ये मेरे लिए काम किया। पहला वाला ये था। फिफ्थ वाला जो था अप्लाई फॉर कंट्रोल, कि अपने मन को कैसे कंट्रोल किया जाए कभी। तो मैं एक नोटिस कर रहा था कि मैं एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैंने नोटिस किया कि मेरा माइंड जो है शांत नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से। और मुझे ये लगता था कि बैठ के जो हम ध्यान करते हैं वही सब कुछ है, और बाकी सब कुछ वो चलते रहता है। ऐसा टाइप का मैंने ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया था। और ऐसा भी परसेप्शन हो गया था कि ये जो टेक्निक है या ये जो विधि है, इसके अलावा सब बकवास है, कोई काम का नहीं है, ऐसा टाइप का हो गया था दिमाग में सर्टेन कंडीशन की वजह से। तो मैंने उसी समय कुछ समय पहले की बात है कि मैं अजान महाबुआ की एक बुक पढ़ रहा था। तो उन्होंने एक बात बताया था कि जब वो समाधि में स्ट्रगल कर रहे थे तो वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे थे। लास्ट में उन्होंने बुद्ध वर्ड्स को पकड़ा और उसमें स्टिक रहा। लेकिन मैं जिस प्रैक्टिस कर रहा था वहां पे मंत्र उच्चारण का एकदम पूरी तरीके से नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, ये भाव था। तो बहुत शंका थी। तो मैंने सोचा कि जब मुझे नहीं हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ सांस मेरे लिए काफी नहीं है, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं। और मैंने वो ट्राई किया कि सांस को बुद्धों के साथ कनेक्ट किया और करने लगा। तो मैंने देखा कि पहले के कंपैरिजन में मेरा दिमाग ज्यादा शांत हो जा रहा है, और मेरा जो अचीव गोल है समाधि में किसी तरीके से जाऊं कि मैं देख पाऊं कि क्या चल रहा है मेरे माइंड और मैटर में, तो वो अचीव होने लगा। फिर मैं थोड़ा दिन बाद समझ में आया कि ये सिर्फ बैठ के मेडिटेशन तो होगा नहीं। और जब आरण्य संगारम में पिछले बार आया तो वॉकिंग मेडिटेशन जो सिखाया, तो मुझे लगा कि इसको भी इंटीग्रेट किया जाए। तो फिर मैंने अपने माइंड को सोचा कि ये सिर्फ 1 घंटा बैठ के अपने माइंड को शांत और सती में रखने का गेम नहीं है। तो मैं जब भी पैदल चलूंगा, पैर को बुद्धों से कनेक्ट किया जाए, तो वो दूसरा मैंने सोचा, उसको इंटीग्रेट किया। फिर तीसरा ये कि यार काम करते समय या गाड़ी चलाते समय दिमाग इधर उधर घूम रहा है, तो उस समय क्या ऑब्जेक्ट लाए, तो मन में बुद्धो ऐसा करना, तो वो एक एंकर की तरह। तो ये पूरे प्रोसेस में मैंने देखा कि यार मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहा था। और मैं उसको किसी वजह से, बस यही करना यही रास्ता है, उसकी वजह से दूसरे चीज को मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरे लिए वो काम कर गया। तो मुझे इसके साथ चलना चाहिए। और मेरा जो गोल है वो जब मुझे कंप्लीट हो रहा है, तो चाहे इससे खाना खाऊं चाहे उससे खाना खाऊं, क्या मतलब है, खाना तो खाना ही है। तो ये पांचवा वाला जो है मैंने ट्राई किया। मुझे नहीं पता सही है कि नहीं, लेकिन बस हो गया काम करके, तो मेरे लिए Yes, thank you very much, Nikesh. Thank you. Yes. हम में से कई लोग इससे जुड़ रहे हैं ना। All right, so we'll close this session now with the homage to the Triple Gem. And anyone who is interested to remain to continue discussing these important topics, it's certainly highly recommended. Yes, in small groups, we can pair up or sit in groups of 3 and maybe share things that we might not have been comfortable to share with the entire group. We can take a quick break first if necessary, and then those who are motivated are welcome to come right back and continue. All right, now we pay respects. Oh, yes, and the next formal event on the schedule for our Zoom audience as well will be evening chanting at 7. We will be chanting the Paritas in honor of this
important event. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghang Namami